ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्योंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो कुछ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के क्लास में ये ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट रहेगा। तो हम वही डिस्कस करने वाले हैं, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट करेंगे और स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? इट इज़ अ इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड द हार्डवेयर। जो यूज़र है और हार्डवेयर है, एक बात समझ लेना, ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस नहीं होता है, ये होता है यूज़र और हार्डवेयर में, ये चीज़ ध्यान रखना आप। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द प्रोसेसेस resources present in the system, responsible for execution of all the processes, allocation, CPU management, and file management. You have to understand that the functions of operating system will be process management रहेगा सबसे पहले, second number पे रहेगा process synchronization, third number पे रहेगा memory management, CPU scheduling, file management, and security. तो अगर हमसे क्वेश्चन आता है कि what is operating system and define or what are the functions of operating system, so we have to go like it is an intermediate between user and hardware, or we can say that it's an interface between user and hardware. And about the functions of operating system, it deals with the process management, process synchronization, memory management, CPU scheduling, file management, and security. Now, here I have why the question we have is why do we need operating system? So it allows you to hide details of hardware by creating an abstraction. So it is responsible for the abstraction, which means that it hides the details which are not necessary by the user. And easy to use with GUI. GUI is a graphical user interface. And third is offers an environment in which user can execute the program or application. इट ऑफर्स एन एनवायरनमेंट जिसमें कि हम अपने प्रोग्राम्स और या फिर एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम मेक श्योर दैट कंप्यूटर सिस्टम इज कन्वीनियंट टू यूज. And for the very detailed, or I say the very specific definition of operating system, an operating system is a program that acts as an intermediary between user of a computer and a computer hardware. As simple as that, operating system क्या होता है? User plus hardware, मतलब कि it is an interface between the user and hardware. Now about the structure of operating system. So this structure, you should avoid this structure. The second one, which one is from black, understand it that user one, user two, and so on. Like we have compilers, assemblers, which are directly connected to the users one and user two. And in this phase, we have application and system software. So in this, we are connected with operating system, and that operating system is connected with the computer hardware. So this one is the users. So as we know that operating system is the interface between user and hardware. So these are the user one, user two, and up to the editor. And this is the computer hardware. We are the hardware connects with the user. So moving on, now there is a topic of types of operating system. So operating system are basically divided into batch operating system, network operating system, distributed operating system, multi-programming batch operating system, time operating system, that is real-time operating system, time sharing, multitasking, and multiprocessing. But as I take the which are the most important questions which are recently asked in the questions of universities and the college examinations. So let we will discuss all of them, but you have to go for a detailed information for the distributed time sharing, multitasking, and multiprocessing operating system. And for the general view of that, batch operating system is the first one which was introduced in 1970s. Similar types of jobs were batched together in क्या होता है इसमें कि हम एक सेम तरीके की जॉब्स को एक साथ बैच कर देते हैं और उसको एक मेन फ्रेम का नाम दे देते हैं. इसमें क्या होता था कि जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला एग्जीक्यूशन प्रोसेस फॉलो होता है, जिसमें जो पहले आता है वो पहले एग्जीक्यूट होता है. And just like this, we have jobs which are batched together. I was not getting the word. So these jobs are batched together and referred to as jobs, then operating system and hardware. So main purpose of operating system was mainly to transfer the control from job to another soon job was completed. Okay. So advantage of this batch operating system is the resident monitoring improves the computer efficiency as it eliminates CPU time between two jobs.
डिसएडवांटेज ऑब्वियसली ये बहुत पहले 1970s में यूज़ होता था। इसकी वजह से इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं, बिकॉज़ ये प्राइमरी फेज़ में था और इसकी कोई प्रॉपर, मैं कहूँगा कि प्रॉपर शेप नहीं लिया था ऑपरेटिंग सिस्टम ने। तो इंटरैक्टिव नहीं था, स्टारवेशन वाली प्रॉब्लम आती थी। स्टारवेशन का मतलब होता है कि सॉरी सॉरी, वन सेकेंड। स्टारवेशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास वी आर नीडिंग सम मोर इन्फॉर्मेशन बट वी डोंट हैव दैट। मैं आपको आगे बता दूंगा क्या होता है। आगे हमारा टॉपिक है, ये हम डिस्कस करेंगे। सो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, it's an extension to batch processing where CPU is always kept busy। इसमें क्या होता है कि हम CPU टाइम और इनपुट आउटपुट टाइम के बात करते हैं। अब बेसिकली मैं बताऊं तो मेन मेमोरी में हमारे प्रोग्राम्स रहेंगे वेटिंग फॉर द CPU, इसमें CPU वेट करता है। और मल्टी प्रोग्रामिंग में इन्वायरमेंट में क्या होता है, इस जो सीपीयू है वो जो प्रोग्राम्स हैं वो सीपीयू का वेट करते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। तो हम सेकेंडरी मेमोरी में राइटिंग करते हैं, मेन मेमोरी से हमने वेट कराया प्रोग्राम्स के लिए, फिर सीपीयू का जैसे जैसे टाइम मिलता जाता है वो आगे अपना एग्जीक्यूशन प्रोसेस करता जाता है। सो एडवांटेज क्या हो जाएगा, थ्रू आउट द सिस्टम इट इज इंक्रीज्ड एज सीपीयू ऑलवेज हैज वन प्रोग्राम टू एक्सिक्यूट। रिस्पॉन्स टाइम्स भी रिड्यूस हो जाता है क्योंकि इसमें जो वेटिंग टाइम है वो बहुत कम रहता है। और डिसएडवांटेज ये रहता है कि प्रोवाइड्स एक environment in which various system resources are used efficiently, but they do not provide any user interaction with the computer program. So that it means that users are not allowed to make any changes or make any kind of what I say, the favorable changes, I should say। एंड मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, इसे पैरेलल कंप्यूटिंग, इस मल्टी प्रोसेसिंग में पैरेलल कंप्यूटिंग अचीव कर सकते हैं। और इसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स मौजूद होते हैं जो कि हमारा परफॉर्म करते हैं, जैसे कि CPU या CPU 2 है जो कि मेन मेमोरी से कनेक्टेड है। यहाँ हम देख सकते हैं कि CPU 1 इनपुट आउटपुट प्रोसेसर 2, जिससे कि हमारा इधर अलग यूनिट निकल रहा है, इधर दूसरा यूनिट निकल रहा है। तो मल्टी प्रोसेसिंग में मल्टीपल प्रोसेसर्स प्रेजेंट होते हैं। टाइप ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में एक सिमेट्रिकल मल्टी प्रोसेसिंग होती है और एक एसिमेट्रिकल मल्टी प्रोसेसिंग होती है। हमें इसके डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं आता है, ना ही आएगा। सो एडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है कि रिलायबिलिटी और थ्रूपुट को इंक्रीज करता है। ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में भी इसको काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करेंगे। डिसएडवांटेज क्या रहता है, इट्स इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड सोफिस्टिकेटेड, इट takes care of multiple CPUs simultaneously। Now we talk about multitasking operating system। Multitasking operating system में क्या होता है कि ये मल्टी प्रोग्रामिंग का एक्सटेंशन होता है और allows user to perform more than one computer task at a single time। मल्टीटास्किंग में क्या है, मेन बेसिकली काम इसका ये है कि एक से ज़्यादा मल्टी कंप्यूटर टास्क है वो एक साथ परफॉर्म करता है। जैसे कि आप देखो कि एक वर्ड है, वेब ब्राउजर है, ईमेल है, सबको प्रोसेस एक ही साथ कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जुड़ के एक सीपीयू में। इसके भी दो टाइप होते हैं, प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग, कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग। इसको हम कोऑपरेटिव को नॉन प्रिमिटिव भी कहते हैं, जो कि हम आने वाले यूनिट 2 में पढ़ेंगे। एडवांटेज क्या है, मोर सुटेबल टू सपोर्टिंग मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली, हैविंग वेल डिफाइंड मेमोरी मैनेजमेंट। डिसएडवांटेज काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए मल्टीपल प्रोसेसर्स आर busier at same time to complete any task in multitasking environment, so CPU generates more heat। so हमारा प्रॉब्लम इसमें हीट का है। और दूसरा बात यह है कि ज़्यादा बिजी होते हैं, ज़्यादा उनका जो दो प्रोसेस के बीच में टाइम मिलना चाहिए रेस्ट का या फिर मैं कहूँ आइडल सिचुएशन का, वो नहीं मिलता है हमको। इस वजह से उनका बिजी बहुत ज़्यादा होता है और उसकी वजह से हीट जनरेशन बढ़ जाता है। Network operating system, again one of the most important question which was asked in the university examinations। इसमें क्या है, हमारा पीयर टू पीयर सिस्टम और क्लाइंट सर्वर सिस्टम के बीच में हमारा होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड I say convenient to use। Advantages are network traffic reduces due to the division between client and server, less expensive to set up and maintain। डिसएडवांटेज ये रहता है कि कोई अगर एक नोड खराब हो जाती है तो पूरा सिस्टम में वो गड़बड़ कर देती है। सो इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम द फेलियर ऑफ एनी नोड इज in our system affects the whole system। Security and performance are important issues, so trained network administrators are required for the network administration। सो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मेरे एग्जामिनेशन में भी आया था जब मैंने एग्जाम दिया था ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ट्रैफिक सिग्नल्स इसका एग्जाम्पल है। ट्रैफिक सिग्नल्स है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, टाइम शेड्यूलिंग होती है और रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, जिसमें कि एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए वो परफॉर्म करता है, उसके बाद रुक जाता है।
और इसमें हार्ड टाइम, सॉफ्ट टाइम, रियल टाइम, सॉरी, हार्ड टाइम, सॉफ्ट रियल टाइम एंड फर्म रियल टाइम आता है, जिसमें हमें पता नहीं जाना है। एडवांटेज क्या है? इजी टू ले आउट, develop and execute real-time application under the real-time operating system. In a real-time operating system, the maximum utilization of devices and systems. You have to understand that in real-time operating system, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको ट्रैफिक लाइट्स का, तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ डिवाइसेस एंड सिस्टम्स. Disadvantage: real-time operating system is very costly. Obviously, it is very costly to develop. Real-time operating system are very complex and can consume critical CPU cycles. टाइम शेयरिंग का ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या रहता है, काफ़ी सारे यूजर्स रहते हैं विच आर कनेक्टेड टू द सेम सीपीयू और द सुपर कंप्यूटर, जिसमें हम परफॉर्म करते हैं एक साथ काफ़ी सारे प्रोसेसर्स को. इसमें डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो security and integrity of the user loaded in the memory and data needed to be maintained as many users access the system at the same time. और दूसरा रहेगा डाटा ट्रांसमिशन रेट्स आर वेरी हाई इन द कंपेरिजन टू अदर मेथड, क्योंकि एक सीपीयू से काफ़ी मल्टीपल यूजर्स कनेक्टेड हैं. मान लेते हैं हम 8 यूजर्स कनेक्टेड हैं, सो 8 यूजर्स के 8 प्रोसेस रहेंगे, 8 डिमांड्स रहेंगे, या फिर कहूँ मैं 8 रिक्वेस्ट रहेंगे, जो कि एक सीपीयू पे 8 बार बार आते चले जाएंगे. तो इट इज़ much more, I say that it is much more, data transmission is very very high. So distributed operating system, this is the most important one. So DOS is not installed on a single machine. It divides into parts, and these parts are loaded on different machines. A part of DOS is installed on each machine to make communication possible. Let me give you an example. Like we have host, CPU, host, gateway, and LAN. It is an example of a banking system. In banking system, पूरा सिस्टम एक डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में फॉलो किया जाता है. एक मैनेजर अलग होता है, क्लाइंट्स अलग होते हैं, और जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अलग होते हैं. सो इट्स काइंड ऑफ distributed system in which we have to perform different tasks for the different applicant, I should say. So advantages क्या है? Provides the sharing of resources. This type of system is fault tolerant. Disadvantage: protocol overhead can dominate computational cost. So now let's discuss about the dynamic view of operating system. Just give me 1 second. I should say, okay. So dynamic view of operating system. So understand that we have what is operating system. As we have learned, the operating system is an interface between user and the system hardware. It is not related to the software actually directly. It is the interface or the interaction between user and computer hardware. So from the user we have the input which goes to the application software. Now from there we have the source request which goes to the operating system, and from there we have hardware instructions which we have to perform will go to the computer hardwares. After that, the processing result which are done by the hardware of the computer are will go into operating system. Then we have the source response which are according to the input, which will go inside application software, and after that processing we will give output to the user which it demands. Now we have to discuss about the process state. So operating system में क्या होता है, जो process है वो काफ़ी स्टेट से गुजरता है, काफ़ी स्टेट्स उसमें परफॉर्म होते हैं. जैसे कि मैंने ये बताया, इसमें डायनेमिक व्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में ये हम एक इनपुट डाल रहे हैं, फिर वहाँ सोर्स रिक्वेस्ट निकल रहा है, फिर वहाँ पे इंस्ट्रक्शन निकल रहे हैं कि हार्डवेयर से कि वो क्या परफॉर्म करना चाहते हैं. तो इनके बीच में प्रोसेस के साथ क्या होता है, तो वो ये स्टेट्स हैं. एक न्यू स्टेट होता है जिसमें कि एक नया आई शुड से प्रोसेस फॉर्म होता है, फिर रेडी स्टेट में जाता है. वो रेडी स्टेट के बाद वो रनिंग स्टेट में जाता है. रनिंग स्टेट के बाद उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि रनिंग स्टेट से फिर वो अगर उसकी प्रायोरिटी नहीं है तो वो मान लेते हैं हमारे पास प्रायोरिटी दूसरी है किसी प्रोसेस की, दूसरा सीपीयू उसको परफॉर्म करना लग जाएगा जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो कम प्रायोरिटी वाला रेडी स्टेट में वापस चला जाता है. दूसरी बात क्या है कि वो वेट या ब्लॉक हो जाता है इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट के कंपैरिजन में, या फिर कंप्लीट हो जाता है पूरा रनिंग टाइम के बाद में, और कंप्लीशन के बाद वो टर्मिनेट हो जाता है. आप वेट और ब्लॉक की बात करें तो वो सस्पेंड होता है या फिर वेट होता है, सस्पेंड होता है या फिर वेट होता है. और अगर सस्पेंड और वेट में अगर ये है कि हमारे पास
प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, पर फिर भी इनपुट आउटपुट है वो स्टिल रहता है, तो वो सस्पेंड और रेडी स्टेट में चला जाता है। फिर रेडी स्टेट से फिर से रेडी हो जाएगा, फिर रिज्यूम होगा, फिर सस्पेंड होगा, फिर रिज्यूम होगा, फिर सस्पेंड होगा, ऐसे परफॉर्म होता रहता है। तो ये सारे स्टेट्स हैं जो कि प्रोसेस फॉलो करता है, और इन सब के बारे में ये है जो कि न्यू प्रोग्राम इज फॉर्म रेडी स्टेट, ये डायरेक्टली जो मैंने बताया आपको वो रेडी स्टेट में जाता है, कि बताने के लिए कि आई एम रेडी फॉर टू गो इनटू द एग्जीक्यूशन। रनिंग स्टेट्स में ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें एल्गोरिथम्स परफॉर्म करता है। ब्लॉक एंड वेट वाले में क्या होता है कि जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है उनके हिसाब से उनको एक सीक्वेंस में डालता है, वेट कराता है या फिर ब्लॉक कर देता है। कंप्लीशन और ट्रांसमिशन में क्या होता है कि हमारा कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाते हैं तो उसका टर्मिनेशन हो जाता है। सस्पेंड और रेडी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी में चले जाते हैं फ्रॉम द मेन मेमोरी ड्यू टू द लैक ऑफ रिसोर्सेज कॉल्ड सस्पेंड और रेडी स्टेट। ओके, so process queue, the operating system manages various types of queues for which process state. The PCP process queue related to the process is also stored in the queue of the some of same state. तो हम बताते हैं इसमें जैसे जॉब है वो रेडी स्टेट में गया, तो जो मैंने इसमें यहाँ पे ऐसे समझाया हुआ है with this figure. I again explain in the easier way so that people can understand in an efficient manner, or I can say that they can remember it during the examination. Okay, so just learn this figure. It is very easy that you have to go to the ready state of CPU, and after the completion will go to the termination, and CPU will go for the waiting or input output phase. Then even an event. Now various time related to the process. तो अराइवल टाइम होता है, इसमें वेटिंग टाइम होता है, बर्स्ट टाइम एंड कंप्लीशन टाइम. So when the process goes into the ready time, it goes for the arrival time. This process will wait up to the arrival time. As soon as its arrival times will reach, you will go in the ready state, and after that, it has to wait for some time according to the running state, or I should say the burst time. Wait for the waiting time, and it will go into the running time, and burst time will be the burst time is actually the completion time, or I should say the processing time, and after that it will go with the completion time. And these are the formulas which are has, and there are some numericals which we'll discuss later. And the formulas are what we have to understand, that is turnaround time, B is burst time, A is arrival time, C is completion time, and R is the response time. So these are the three formulas which will solve all your problems. So CPU scheduling we will discuss in the next lecture, and these algorithms we will discuss in the next lectures, so stay tuned.